at the moment, India will probably sense that Australia is not quite as good as chasing team as what they need to be. And so perhaps I think both teams will want a bat first, obviously. Oh, yeah. Look, I mean, as an Australian, I'm very proud to see the Australian cricket team make another World Cup final, and after such a slow start to the tournament, they've come back tremendously well. There's been some great individual performances, and they've played some really tough cricket. So, obviously, I'd like to wish them the best of luck, and it's always a pleasure watching, a team like India, how they're playing, and how in control of their game they are. And so, I'm really looking forward to watching the final. Well, I mean, look, it's very difficult to go past Virat Kohli. He's been an amazing player for a number of years in all formats, and is really setting the standard, the pinnacle. Someone like Rohit Sharma is such a dynamic player that he can take away the game in the first sort of 10 or 15 overs from the opposing team. But also Australia have their great players as well. I've been a fan for, although he hasn't performed as well as he would have liked in this tournament. Steve Smith has been a great player, and if he plays well in the final, he should contribute to having a really good stand for Australia. David Warner's been playing spectacularly, and Zampa, of course, and also Maxwell is capable of anything. So, let's see what happens. Pleasure. India unbeatable India right now. जैसे खेल रहा है, so it's amazing, and also bowling department, fielding department, also batting department, तीनों department में अनबीटेबल है. और जो 2003 में जो सौरभ गांगुली हार गया था फाइनल, और एक रिवेंज भी बोल सकते हो. अभी अहमदाबाद में 19 तारीख को पूरा देश भारत को सपोर्ट करेगा, और हम लोग ट्रॉफी जीतेंगे जरूर, बिकॉज इंडिया लीग पेजेस और ऑल्सो सेमीफाइनल में अभी तक कोई भी मैचेस नहीं हारा है. नॉट ओनली नहीं हारा है, डोमिनेट करके जीता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्फिडेंस जो प्लेयर के साथ है. बट मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि थ्रू द मीडिया, प्लीज कम डाउन एंड just play one more matches, good matches. Then after that we will do Bhangra, whatever we want. But we have to focus on 19th. See, this depends wicket. So depends on the wicket कैसे behave कर रहा है. And also is a final match. Is a high voltage match, too much pressure, everybody watching this game. So we can't say easily to have to win, but this player so much pressure because they did well और हमारा वो believe उनके ऊपर है, और कि इस बार भी ये लास्ट मैच भी इंडिया अच्छा खेलेगा. रोहित भी ब्रिलियंट कैप्टनसी कर रहा है, एंड सारे प्लेयर एकदम टॉप पे है. एकदम परफॉर्मेंस सबने परफॉर्मेंस किया है, कंट्रीब्यूट किया है दिस वर्ल्ड कप में. सो अगर बहुत खराब नहीं होता है तो इंडिया को कोई नहीं बीट कर सकता है. गो इंडिया गो. और इस बार वर्ल्ड कप अपना घर में हम लोग जीत के ही रहेंगे. चक दे इंडिया. I think India are going to be the favourites. Have played fantastically well and consistent throughout this whole campaign. But Australia, probably the best two teams are in the final. I think Australia won 8 in a row, and they're going in the right direction. But I think India must be favourites leading into. They know the conditions. They played well, and then the crowd. I mean, 120,000. It's a fantastic arena, and I'm sure that will play a part. But you never count out Australia. They're always a very good team, and it should be a great contest on the 19th. You thought that New Zealand have come down on
the last semi-final. And what's your advice or what's your input for Indian team? I think I think finals are all about enjoying yourself and expressing your talent. The Indian team have been doing that with spades throughout this whole tournament to date. So, no, I think they don't need to do anything differently. Just continue on with that same momentum and same mindset that they've gone in with so far. Rahul Dravid's a class coach, and I think these games are all about staying in the moment and not getting too far ahead of yourself. And I'm sure they've played enough cricket and big games to understand that. What's your expectation on the board numbers? What's your expectation on the board and numbers like that? I think any team, winning the toss and batting in Ahmedabad is going to be a big part. But you never count out Australia. They're always they always play well and come well at tournaments, and I'm sure they're wanting to upset the party here in India if they can. But no, I think India must be the hot favourites the way they've been playing so far. So who you gonna cheer for? I'm in India. India's my second home, so and New Zealand always want Australia to. Am I allowed to say lose? But any sport. Yeah, I am Srinath Chituri, the CEO of Southern Superstars. So today we are assembled here for the jersey launch of Southern Superstars, and I'm quite excited for this franchisee. So this is a season 2 for Legends League. Last year there were 4 teams, and this year we are up to 6 teams. So we are one of the new teams over here. So the process was we have picked players from the draft. So I'm quite happy with the squad what we have. As I said before, we have Aaron Finch, who's our captain. Then we have Ross Taylor, who's our vice captain. Then we have good players like Ashok Dinda or Manvinder Bisla or Upul Taranga. So we have a quite good mix of players. And looking at other squads, I'm confident that our squad will do. And we have legend players. And we have a legend coach also, Michael Bevan. So I'm hoping we'll do well this year. Apart from this, can you also tell about or cheers for your view about India versus Australia? I'm going with India. There's no two ways about it. I'm going with India. So there's nothing to say more about it. We are going to be 10 on 10. Thank you. Thank Can you just tell about your view about India versus Australia in the last final match and in the semi-finals, unfortunately? Is it about the World Cup? Yeah, obviously the semi-final didn't go New Zealand's way, but India are the informed team at the moment, and they're playing on their home turf, so they're going to be very hard to beat. And the boys put a good shift in and got close. But I think India's batsmen are just in too good a form at the moment, and I think they'll win the World Cup this year. I think. What's your expectation on the Indian team in the final? How much score both going to be for the cup? Both teams have got good batsmen, so I think it's going to be a high-scoring game both ways. So it should be. I'm hoping for a real good game, nice close game. But yeah, I'm still going to back India just because the batsmen are in such good form. So you said that who's going to bat first? They're going to Yeah, I'd say batting first seems to be the way most teams have been going and winning. So yeah, I can see whoever wins the toss is going to bat first. बुमराह और टीम का परफॉर्मेंस न सिर्फ मेरे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जहां तक बुमराह का सवाल है, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, तो किसी को भी न सिर्फ इंडिया में या भारत में पूरे विश्व में उसके लिए गर्व की बात है। और जहां तक एचबी कापड़िया का सवाल है, एचबी कापड़िया में उसके इनिशियल जो पहले से 2 साल थे वो वहां पे रहे। वहां पे उन्होंने वहां पे कोई ज्यादा कोचिंग नहीं लिया, मगर वो टीम के साथ खेले और जो बेसिक जो बोलते हैं कि क्रिकेट का जो बेसिक होता है कि खेलना क्या होता है क्रिकेट के मैदान में, वो करीब उसने वहां से थोड़ी सी तालीम ली। उसके बाद का तो सब आखा इतिहास सब पूरा जानता है, सब जानते हैं लोग। सर कौन से साल में कितनी उम्र के थे जब साल तो मैं मानता हूं वो था 12-13 साल के थे। और काफी हमारी
अंडर 14 की जो टीम होती है, GCA की जो CBC अहमदाबाद क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाता है स्कूल की, उसके लिए हम लोग खेलते थे। तब उसको हम अंडर 14 में खिलाते थे, मगर उसके जो स्टाइल थी, उसका जो परफॉर्मेंस था और उसकी जो पेस थी, वो उस एज के बच्चों के लिए अकल्पनीय थी। बच्चों को करीब करीब बॉल दिखता ही नहीं था। अगर वो स्टंप में बॉल डाले तो समझो कि डंडा गिरना फिक्स है। इतना अच्छा तब से उसका चलता था। उस समय भी बतौर गेंदबाज वो काफी स्कूल के समय में काफी घातक गेंदबाज रहे थे। स्कूल के इसलिए जहां तक एज भी कापड़िया में रहे, घातक ही रहे, मगर उनको ज्यादा परफॉर्मेंस करने का चांस नहीं मिला क्योंकि उनकी एज भी छोटी थी और उनको ज्यादा चांसेस, हमारी स्कूल को भी ज्यादा चांसेस नहीं मिले कि हम ज्यादा आगे खेल सके। इसलिए उसको ज्यादा इस स्कूल में से ज्यादा चांसेस नहीं मिले। उसके बाद वो काफी अच्छा किया। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब मिला उनको, सबसे पहला क्रिकेटिंग लाइफ के लिए? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू उसको मिला IPL में। जब उसकी IPL में मुंबई इंडियंस के लिए पसंदगी हुई, वो उसके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। ये सब मेरे हिसाब से है, क्योंकि उसके बाद उसकी कैरियर अप ही अप गई है। कितने बड़े गौरव की बात है, कितना गौरव महसूस होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज बुमराह आपके अंदर भी, आपके गाइडेंस में भी खेल चुके हैं। अफसोस होगा ही, अक्सर होना ही चाहिए। इतना बड़ा गेंदबाज बन गया, वो तब शायद इतनी कल्पना नहीं थी कि ये इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। और अभी काफी, मगर तब एक बात पक्की थी कि तब भी मैंने उसकी मदर जब हमारे पास आई थी तब मैंने पूछा था कि सर ये तो बच्चे को क्या करवाना चाहिए, तो मैंने कहा उसको खेलने दो ना, अगर इतना अच्छा खेलता है उसको खेलने देना चाहिए। और उसका बहुत अच्छा तकदीर है कि उसको उसके पेरेंट्स ऐसे मिले कि उन्होंने उसको इतना मौका दिया कि भाई खेल पे तू फोकस कर, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई भी जरूरी थी, पढ़ाई तो करनी चाहिए, और उसके साथ उसने जो क्रिकेट को जो प्राधान्य दिया उससे उसको बहुत बेनिफिट हुआ। सर खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति कितने गंभीर थे उस समय के बुमराह? शायद पागल था, क्रिकेट के प्रति पागल था वो, जिसको दीवानापन बोलते हैं। उसको क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था तब। पहले से गेंदबाजी, बैटिंग और फील्डिंग उसका सब्जेक्ट नहीं था, तब भी नहीं था। वो तो अब काफी कुछ इम्प्रूव किया गया, क्योंकि एक लेवल पे आपको जाना होता है तब आपको सब तरीके से परफॉर्मेंस करना होता है। फाइनल में क्या एक्सपेक्टेशन, खास तौर पे बुमराह से? बुमराह से फाइनल में सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा कम से कम 2 ब्रेक थ्रू इनिशियल ओवर में मिल जाए, पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले। उनका गुजरात में खेल रहे हैं। हाँ, होम ग्राउंड तो है, उसके लिए कोई भी ग्राउंड मायने नहीं रखता, उसका चलना चाहिए। उसका दिन अच्छा है तो किसी को भी कहीं पे भी गिरा सकता है, वो किसी को कहीं पे भी गिरा। ठीक है ना। और इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग पूरे परिवार के साथ काफी सारे ग्रुप आ रहे हैं। मैं सब आपका नाम बताऊँ, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, क्षितिज गुड़गांव से। क्षितिज जी बताइए कि किस तरह से आपने टिकट बुक किया था और आज कल 19 तारीख को ये मैच है, तो क्या सोच के आए हो और किस तरह से पूरा सफर रहा? इंडिया को जिताने आए हैं, तो टिकट बुक मैच से मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली है। 7:30 ऑनवर्ड, 8 बजे लिस्ट होती है वो, 7:30 ऑनवर्ड बस बार बार रिफ्रेश कर रहा था। 2-3 लैपटॉप लगाए, 4-5 दोस्त बैठाए, तो रिफ्रेश करते करते किस्मत है मिल गई। तो फैमिली के साथ आया हूँ, तो फैमिली भी सुबह ही, मैं भी पहुंचा, तो बस जिताना है इंडिया को। किस तरह से पूरा एयर फेयर, किस तरह से आप लास्ट में उन पर आपने बुक कर रहे हो, तो कितना ज्यादा? हाँ सर, महंगा पड़ा। मतलब मेरे टिकट अभी जब 2 दिन पहले टिकट मिली है, तो चांस की बात है, मैं सुबह 3:30 बजे फ्लाइट चेक कर रहा था, दिन में तो बहुत महंगी थी, तो 3:30 बजे चेक किया, तो उस टाइम पे मेरे को मिल गया ठीक ठाक रेट पे। मतलब फैमिली की एक्सपेंसिव हुई है, तो बुकिंग का तो महंगा चल रहा है काफी ज्यादा। के साथ किस यहाँ दौरा करने? नहीं, आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत 10 सालों बाद आई थिंक इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है एंड इंडिया फाइनल में आई है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड इसी को देखने के लिए मैं अहमदाबाद आया हूँ भोपाल से एंड काफी एक्साइटेड हूँ। मैं चाह रहा था साउथ अफ्रीका आ जाए फाइनल में, कि थोड़ा लग रहा था आसान हो जाएगा, बट ऑस्ट्रेलिया इंडिया इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल मैच। किस तरह का दिक्कतों का सामना, क्योंकि टिकट भी बहुत महंगी पड़ी होगी, मैच की टिकट भी महंगी पड़ेगी, फ्लाइट की टिकट भी महंगी, मगर किस तरह से पूरा सफर करने के बाद कुछ भी करके अहमदाबाद आना था? बिल्कुल, इसलिए मैं 2 दिन पहले आ गया। आप देख रहे हैं मैं आज 17 तारीख को आ गया हूँ ऑलरेडी अहमदाबाद, क्योंकि अभी 18 और 19 की फ्लाइट्स एकदम बहुत हाई प्राइसेस चले गए हैं, 25-30 हजार की फ्लाइट्स हो रही हैं। तो मैं किसी भी हालत में चाह रहा था कि मैं मैच पक्का देखूं यहाँ पे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद फिर ना मिले इंडिया में फाइनल, और इंडिया फाइनल में खुद है, तो आई थिंक एंड कंट्री की सबसे बड़ी स्टेडियम में मैच भी हो रहा है।